and the omnipresent here. Bring yourself to both the here and the now. And the easiest way to do that is to bring your attention to your breath. आपकी सांस को देखिए, आसानी से जैसे शरीर में आती है और आसानी से जाती है। ये आती जाती सांस हमेशा is always in the now. You cannot breathe yesterday, you cannot breathe tomorrow. You can only breathe where you are right now. So by connecting ourselves to this ever-present breath, we automatically connect to the here and the now. This here and now, in which there is never anything incorrect. This here and now is never a challenge, is never a problem, is never an issue. All problems arise out of our regrets of the past, or they arise out of our fears or concerns for the future. The now को ना अतीत है ना भविष्य है. जस्ट नोटिस करिए आपकी लाइफ, जब भी कुछ भी समस्याएं या कठिनाइयां आई है, वो हमेशा अतीत को लेकर या भविष्य को लेकर ही आती है. What will happen? How will it happen? What will happen to me, my family, to this country? It's in the future. Why didn't I do this? Or why did I do that? Why didn't I say this? Or why did I say this? There's a worry and regret about the past. In the now, there is only peace. In the now, there is only okayness. In the now, there is only acceptance. In the now, there is only love. Abiding in this now, life automatically, immediately, instantly, and miraculously becomes peaceful, becomes joyful. There is never a now which you cannot handle. There is never now a now there is never a now which overwhelms you. कोई now, कोई अभी, कोई ये पल ऐसा नहीं है जो आपको हरा सकता है.
पास्ट और फ्यूचर, इवन इमीडिएट पास्ट, इमीडिएट फ्यूचर में चाहे जो भी हो रहा है, अभी, सिर्फ अभी, चाहे कितनी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे कितना कठिन ये पल क्यों ना हो, ऐसा पल आज तक किसी ने ना देखा है ना देखेंगे जो आप पर विजय करे। आप हारते हो तो सिर्फ फ्यूचर को सोचकर, चाहे फिर वो मेंटल वरीइंग हो या इमोशनल कोई फीलिंग हो, या चाहे फिर वो फिजिकल पेन भी क्यों ना हो। Physical pain overwhelms you only when you are worried about the future. A headache, for example, is only a headache, and it can never overwhelm you in the now. But when you say, "Oh, I've had this headache for all day, and how long will this headache go on? I can't stand it anymore." Because now you're adding up the past and you're projecting into the future. That same headache, which right now, in this moment, if there's a headache, it is only a headache. But when you add up the headache that was there in the past and worry about how long it will last, only then the headache becomes a problem. Living in the here, living in the now, extending this understanding, यही समझ को जीवन में हम लाते हैं, ला सकते हैं। And in this moment of peace, the peace that you seek, the love that you seek most, is readily and immediately available when you are in the now. Whatever is in the now only happens one at a time. But if you think about the 10, 20, 50, 100 different problems that you have in your life, 50 problems can overwhelm you, 100 problems can overwhelm you. But they actually don't happen all at once. They only show up to whatever extent they can show up in the now. Only one thing. And no matter what that one thing is, you're fully equipped, fully empowered उस समस्या को, उस कठिनाई को, to resolve it, to be with it, to accept it, to be okay with it.
And being okay with it is just another way of saying to be in love with it, to love it, whatever it is. Wonderful. Slowly just open your eyes, and if you can, turn on your videos. As it is, this satsang is happening virtually. We are not able to be together, sing together, dance together, laugh together. So at least let us make full use of this technology and at least see each other. Great. आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल जो ये आने वाला है. Each moment has the potential of a lifetime of experience. And ultimately, there is only that moment. If we miss, there is another moment, but it is always a moment at a time. Wonderful. So, I wanted to share a wonderful experience from this Sunday morning. uh, One of my long time dreams was fulfilled on Sunday. So, most of you know I'm into music. I love to sing. I love to play the guitar. I love to uh, dance. And I always felt that it would be wonderful to sing and dance on the streets, not any organized concert or performance or anything. People are just passing by, walking by, and yet we get to uh, share a moment of music with them, a moment of lightness in the middle of whatever they are hurrying towards. But Mumbai, for me to do this has not happened. Largely because for some reason Mumbai में इतने street performers दिखाई नहीं देते जितने कि मान लो यूरोप में यूएसए में किसी भी शहर में चले जाओ तो हर every center of town, every street corner, every subway station, train station, there's somebody with a guitar or a violin or a clarinet or a saxophone singing and all that. So I always wanted to do that. Never got around to it. But on Sunday, we had gone cycling, a few friends, and
and they had closed off the street to traffic. Some of the streets, there are 13 locations in Mumbai which are closed to traffic from 7 a.m. to 10 a.m. every Sunday. And there on that street, you are free to just ride a bike, ride a skateboard, ride a scooter, ride a bicycle, walk, run, jog, do yoga, and exercise, dancing, all that stuff happening and supported by the authorities. So there was a group of volunteers from this group called Save Soil who were promoting that, that we need to save the soil. जो ये धरती है हमारी, उस पे जो टॉप लेयर ऑफ फर्टिलिटी जो है, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स पर्टिकुलरली कैन सर्वाइव, कैन ग्रो, वो टॉप सॉइल जो है वो बहुत तेज गति से खत्म हो रहा है. So save soil, save soil, save soil. So there was this group of volunteers. So it was a nice energetic group of people, and we had gone bicycle riding, but I had taken my guitar with me. So we just connected with them and started to sing. And since the theme was save the soil, save soil, so I'm, of course, you know how I modify lyrics. So I modified the lyrics to suit the save soil. मिट्टी को बचाना है, मिट्टी को बचाना है. तो उसको लेकर हमने कुछ गीत गाए. So maybe I'll share one of those with you from that street scene just 2 days ago. And it was so much fun. And हम गा रहे थे, नाच रहे थे. उसमें one police officer came and we were like, ये बम्बई के पुलिस रोकेंगे हमको, नहीं बंद करो ये सब. But to our great surprise, he not only didn't stop us, he said, enjoy. So we were very happy, and we did. So let me see if I can find that video. Who did I send it to? So let me share the screen, and we can see the little bit of the song. So, but bottom line is, my dream of performing on a street of Mumbai was fulfilled this Sunday. And this is going to go on for many, many weeks. So I think we can do this every Sunday morning. So I'm inviting everyone who is in Mumbai from this group to join us on Sunday mornings. We can go for a bicycle ride, we can go walking, jogging, swimming, and at the same time do a little bit of street activity, including, of course, music. So let's see who are all from Mumbai over here. राजेश जी, Rajesh is there. हम लोग कवाली करेंगे. हाँ, कवाली करेंगे, भजन करेंगे, फिल्म सॉन्ग गाएंगे, यज्ञ करेंगे, हवन हवन करेंगे. करेंगे. Yeah, let me see. Let me share the screen. And then if anyone has questions, we'll go to that. Can you see the screen? Yes. Hello. Okay. Yes. Okay, great. So let me see. मेरी मंजिल उसके बिना गुजारा है, दिल है मुश्किल ये है सॉइल मेरा, है
तेरी मेरी मंजिल, इसके बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है सोए लाजमी, जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, मेरी मंजिल उसके बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, ये है. So that was one of them. You could hear the song, the music? Yes? Okay, great. So who else is in Mumbai? Rajesh, you are in Mumbai? And Amruta is Pune, Manorama, I don't know, Chitra, Pandeyji. Chitra. Chitra is in. Chitra is in Mumbai, definitely. And Naived, you are And in Mumbai? Sonal Nesta Sonal is in Mumbai. not come today. Naived in... He's not able to unmute, is it? Okay, wait. Now you can unmute probably. Aman. Okay. Anyway, Naived, if you're in the WhatsApp group, then you'll get the message and we'll have a meeting point and you can join. He's from Pune. Great. Naived. Oh, Naived is from Pune. Okay, no problem. Okay. उतना दूर भी नहीं है वैसे पुणे. पंख होते तो उड़ाती रे. पंख होते तो उड़ाती. पंख होते तो उड़ाती रे. उड़ाती रे. Yeah. आता रे वही आता. Nice. So there's a website savesoil.org, savesoil.org. उस पे आप जा सकते हैं and register as an earth buddy. अगर आप मानते हैं कि इस धरती के कुछ दोस्तों की ज़रूरत है खास तौर से इंसानों में से, तो you can become an earth buddy by going to that website and registering your name and phone number, and Could you they'll please guide. put that in the open door group? The Yeah, link. I'll do that. Yeah, I'll do that. Okay, great. So we have a few minutes left. So any comments, questions on this, on whatever, anything, any questions on anything that you'd like to ask? So one of the things I realized, there's a difference between a guide, or forget about the difference. Like, what is a guide? So a guide is a person जिसको जिसको रास्ता पता है, जिसको रास्ता पता है और वो रास्ता उसको ठीक से पता है, और वो रास्ते पे कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ कठिन है, कहाँ आसान है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, वो सारी बातें उस गाइड को सही तरह से उसको पता है, और वो ये रास्ता आपसे शेयर करता है. लेकिन गाइड जो है वो आपके अगर हम साथ जा रहे हैं तो वो गाइड भी आपके साथ ही चल रहा है. मतलब आपको अगर रास्ता कठिन लग रहा है, चढ़ान है, तो ऐसा नहीं है कि वो गाइड है तो उसके लिए वो चढ़ान नहीं है, उसके लिए भी वो चढ़ान है. फर्क इतना ही है कि उसको पता है कि ये चढ़ान है और यहाँ अभी संभलना है बस, और अपनी ताकत पूरी लगानी है.
लेकिन उसके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि वो सीधा ऊपर पहुंच जाए बिना किसी कष्ट के। जादू से वो गाइड है तो बस उसको कोई तकलीफ ही नहीं है, उसको कोई कठिनाई नहीं है, ऐसा नहीं है। सो so I realized, for example, there are many challenges that I also face in my life. So just because all I'm clear is which way to go, how to go, I have no guarantees that it is an easy path. And I have no magic formula or some magic wand which will miraculously take me higher and further than any of the others. I don't know. There may be people like that in the world. I don't know who can do that. But certainly I'm not one of them. I am walking this path with you through many difficulties, many challenges, just like you. But मुझे ये पता है कि चाहे जो भी कठिनाई है, उसमें ये नॉलेज, ये जानना कि मैं आखिर में वो हूँ, और उसे याद करके उसके गुणों को जितना हो सके उस पल में लाना। और जब मैं वो गुण उस पल में लाता हूँ तो वो रास्ता, चाहे वो चढ़ान वाला हो या ना हो, वो रास्ता आसान बन जाता है। तो कोई जादुई छड़ी नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, लेकिन साफ 100% क्लैरिटी है कि रास्ता ये है कि प्रेम के सिवा कोई रास्ता नहीं है, इस पल में रहने के सिवा कोई कोई रास्ता नहीं है। हमारे अंदर जो देवत्व है उसको देखना, जानना, समझना और उस हिसाब से रहने से आसान कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता है, सही रास्ता है, और सब जो रास्ते हैं उसमें से सबसे डायरेक्ट रास्ता यही है। उतना हमें पता है। कनेक्टिंग विद डिवाइन, एग्जैक्टली। Connecting with divine, but knowing that the divine is not some distant being far away from you. It is your own true nature. Discovering that I am not separate from divine, that divine operates in me, through me, with me, using my body, using my words, using my thoughts to express and to love. So it's a co creation of life. So it is time we recognize that and stop living out of separation, stop living out of thinking that we are some separate being that somehow has to merge or become, through lots and lots of uh, struggle, become one or close to the divine, as close. Aisa nahi hai. You are that. You already are that. There is nothing you need to do. You already are that. So that is the way, that is the direct path. And it's a beautiful journey. कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सुनते हैं कि ये अवधूत होते हैं, कुछ शेयर करते हैं कि भाई मैं वहाँ गया, उस जगह पे उनके साथ बैठा और मेरी जो पीड़ा थी, मेरा रोग था, होल इन द हार्ट इज हील्ड by some cosmic surgery and all of that. I don't know how that works. I have no clue. uh, and I have no reason to not believe it. I mean, हमारी रिट्रीट में भी लोग शेयर करते हैं कि ओ माई लाइफ इज़ नाउ ब्यूटिफुल, माई लाइफ इज़ मैजिकल। तो हम अगर उनको मान लेते हैं, हमारी रिट्रीट के बाद अगर जो शेयर करते हैं उनको मान लेते हैं, तो उन लोगों को भी हमें शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ऐसा कुछ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो ये भी सही है। अगर होगा चमत्कार, ओके मे बी, बट मुझे लगता है कि मान लो कोई अ, कोई पहाड़ है आपके सामने, एंड इट्स अ चैलेंज दैट यू वांट टू ओवरकम। और अगर दो रास्ते हैं, कोई कहता है कि
बस ये सफ़र करो, चल के जाओ अपने आप पैदल, और go through whatever difficulties and struggles, and eventually you will get there. And there's another option which says, अच्छा वो ये सब छोड़ो, हमारे पास हेलीकॉप्टर है, 2 मिनट में आपको वो चोटी पे ले जाएगा। तो जैसे जादू लगता है ना कि एक तो मैं चलूं और बहुत कष्ट होगा, डेंजर है, रिस्क है, और हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, और ये हेलीकॉप्टर कहता है कि बस मैं 10 मिनट में आपको ऑन द टॉप। सो द क्वेश्चन इज, which one is the more interesting option? Which one is the more exciting option? Which one is the more adventurous option? And to me, it is very clear. It is just put one foot in the front of the other and go. हंसते गाते पहुंच जाओ ऊपर, चाहे 2 दिन लग जाए, क्योंकि पहुंचना तो ठीक है यार, पहुंचने में क्या रखा है? सफर, द सफर इज इंपॉर्टेंट, द जर्नी इज इंपॉर्टेंट। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। वो हेलीकॉप्टर आपको मंजिल तक ले गया, लेकिन सफर आपने मिस कर दिया। सो इवन दो देयर मे बी सम मिराक्युलस वेज कि आप कोई जादुई छड़ी घुमाकर आपको बस लगता है कि आई एम नाउ whatever, cured, enlightened. I'm more interested in this one, self-driven, self-motivated, walking the path together, taking everyone along. कोई गिर गया, उसको उठाओ, संभालो, ले जाओ साथ में, rather than some miraculous boom, 1 2 3 done. So anyway, but I'm still fascinated. अभी अभी मेरे हाथ में एक किताब आई, जो एक one lot of disciples are sharing that with this guru they just went and paralysis is cured, and the hole in the heart is magically healed. I'm like, wow, बहुत बाकी है हमें समझना और जानना, and that is also beautiful कि हमें नहीं पता है ये सब। Great. संजय जी, मुझे Any कुछ शेयर thoughts, करना था। comments? हाँ, sure. अभी मैं मसूरी से बोल रहा हूँ Oh, और पिछले 1 वीक से मैं घूम रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना है आपके साथ, क्योंकि क्या पूरे वाह। 1 वीक से मैं आपके साथ ही घूम रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल। ये मतलब हर जगह, जैसे अच्छा, जितने ओपन डोर पे हमारे सेशन होते हैं ना, वो हर एक सेशन मुझे गाइड कर रहा है, हाउ कैन आई ब्रिंग दैट इनटू दिस। अच्छा, और अभी जो प्रोसेस लिया this, आपने वो पेन के बारे में, वो तो इतना अमेजिंग right. एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मैं जगह पर से उछल रहा था लिटरली आज बैठा तो, जब आप बता रहे थे ना कि ये अच्छा, करेक्ट, पेन, ये पेन यदि प्रेजेंट में नाउ में है तो वो पेन नहीं रहता। पेन इज बिकॉज ऑफ पास्ट और फ्यूचर। करेक्ट, तो ये करेक्ट, आपने अभी बताया ना, या, ये आपने वो आप हमेशा बोलते रहे कि हाउ कैन आई ब्रिंग दैट इनटू दिस। राइट, तो मैं ये पहाड़ी में घूम रहा हूँ और बहुत सारा, मतलब इतना ज्यादा फिजिकल, तो उसकी वजह से बॉडी में अलग अलग जगह पेन्स है। लेकिन वो पेन के श्योर, साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, वो आपको मतलब ओपन डोर पे जो मैं हाउ कैन ब्रिंग दैट इनटू दिस, तो ऐसे कर दैट करके वो इज, नाव में रहना सीख राइट, गया। और वो नाव में रहने की वजह से पेन करेक्ट, को मैं इतने अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ जैसे मैं खेल रहा हूँ उसके साथ। राइट, राइट, लिटरली ब्यूटिफुल, मतलब ब्यूटिफुल, जब भी मैं नाव ब्यूटिफुल। में प्रेजेंट हूँ ना, तो वो पेन नहीं है। और जब मुझे चिंता होती है द कि मैं पेन इज कैसे नॉट देयर, ये पहाड़ी कैसे चढ़ूंगा, ये कुछ करूंगा, तो तब पेन वो का पेन एहसास जाके जाता हूँ। प्रॉब्लम बन जाता है। एग्जैक्टली, प्रेम, वो वही पेन बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन यू थिंक, ओ फ्यूचर, ये पेन है तो मैं कैसे ये करूंगा वो। एग्जैक्टली, बाकी इन द हियर एंड नाउ, एब्सोल्युटली, the pain is just what it is. There is no, not a problem. And yes, wonderful. And coming from you with your medical background as a doctor, that makes it even more real for everyone कि
पेन जो है उसकी दवाई है, वो है वो सब ठीक। मतलब इतने साल से मैं और ये सब नॉलेज का एप्लीकेशन करते करते वो ओ कट हो गया शायद। हाँ ड्रॉप, वी डिडंट हियर द लास्ट पार्ट। ये सब ये नॉलेज का एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन प्रैक्टिस करते करते इतना प्लेफुल हो गया ना वो पेन भी, तो वो मतलब वो या मैं जब चाहूँ तब उससे बाहर हो सकता हूँ ऐसा लगने लग गया। कर थैंक यू वेरी मच। चलो शायद संजीव जी फ्रीज हो गए। क्या बात है, इट इज सो हॉट। ये तो करिश्मा है। करिश्मा नहीं है, जेनिफर माँ है। Yes, yes. He's coming again. ये जो इंस्टा मेडिटेशन था ना, ब्रिंगिंग दैट टू दिस, पुरुषोत्तम जी, हाँ हाँ जब संजीव जी ने बताया था ये ब्रिंग हाउ टू ब्रिंग दैट टू दिस, वो तब मैंने आई वाज डूइंग दिस फिजिकल वर्कआउट सॉलिड, तो मेरा पूरा अंग बहुत दुख रहा था. So actually I did this with every part of my body. I'm bringing that to this in my liver. I'm bringing that to this in my legs, wherever there was pain. And I did it for 5 to 10 minutes. I did it for 5 to 10 minutes, and like at least 5% to 10% pain went less, because it was the power of the nerve also in it. जैसे आप बोलते हैं ना, मैं पेन साथ खिलवाड़ कर रहा था, सच्ची मेरा instant healing होने लगा, because I was, that attention was going to that part and bring that to this. खाली वो bring that to this कर रही थी. मैं healing में लाइन में हूँ, तो I experimented, और experimented में 10 minutes में मेरा 5-10% तो कम हो ही गया. What I'm saying is that. तो it is very powerful. जो इंस्टा मेडिटेशन है संजीव जी का, I think last time only I put the link in the group. अब नैवेद्य जी आप है क्या ग्रुप में हमारे? है, आप ग्रुप में हो हमारे? Yes. You are there. Okay, wonderful. So then it's good. So you must have seen that Insta meditation. बहुत simple है. How to bring कोई भी चीज हो जाए, we just bring that is the higher self, the I am, the bigger I am, to this, whatever the situation is, and then don't wait for answers. Just move on, and automatically things start working out for you. Right, absolutely. And that is the experience of everybody, and you can also experience it yourself. हाँ संजीव जी आ गए. आ गया. Okay. Yeah, so what I was saying is, it's always when you add the past or the future, the pain becomes unbearable. The unbearableness of pain has everything to do with past and future. मुझे लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, तब मैं 10 दिन तक ऐसा था, ऑल दैट, ओ ये सहन नहीं हो सकता मुझसे, और ये कब तक चलेगा? वरना इस पल में जो भी है, ओके, वॉट एवर इट इज. गाना जो भी है बस यही एक पल है. कमान. आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है. दैट्स राइट. ओके, we'll do a song next time. Okay, great. Hello, bye. So Bye, thank bye, you. namaste. Chalo, namaste everyone. Namaste. Bye, bye everyone. Any comments or questions, Naived? मुझे तो बोलने दीजिए. हाँ, बिल्कुल. इरशाद. 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 सिर्फ हेलीकॉप्टर से नहीं, कदमों से भी उड़ान होती है. वाह. अरे वाह.
हेलीकॉप्टर से सिर ही से नहीं, कदमों से भी उड़ान होती है। बिल्कुल। और जीते हैं हर पल को, जीते ये हैं है हर पल को, हर पल को, तब जाके और कोई बात होती है। जिंदगी से उनकी पहचान होती है। तब जाके कोई बात होती है, जिंदगी से पहचान होती है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पैरों पे चल के भी उड़ान होती है। ग्रेट। सो राजेश, मुंबई। तो मैं एक सेंटेंस बोलूं। हाँ बोलो बोलो। संजीव जी का ज्ञान लेके मुस्कुरान होती है। वाह 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 वाह। इरशाद इरशाद, क्या बात। आपने तो मिसरा पूरा कर दिया, वो पूरा। हाँ वही पर मेरे को एक संजीव और जी का लाइन क्या ऐड किया, बोलना ख्याल नहीं आया जल्द इंस्टेंट। बट आ ही गया। चलिए, चलो, संजीव वंडरफुल। जी का प्रवचन सुन के मुस्कुरान आ जाती है। मुस्कान आ जाती है। वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो बम्बई में राजेश, संडे मॉर्निंग, स्ट्रीट स्ट्रीट Yeah, happy नाउ streets. Yeah. नाउ। हाँ, Happy streets. हेलो। Yeah. हैप्पी Happy street. It is called happy street. No? happy streets, yeah, Yeah, happy happy street. streets. So if it is there in your area, we can come there also. Otherwise, you come this Yes. side. 1 2 3 4 5 6 people, if we are, we'll have a lot of fun. And yeah, and one more thought I've had is street meditation. I think I'd mentioned it last year at one point कि ये स्ट्रीट सिंगिंग तो, म्यूजिक तो बहुत लोग करवाते हैं, स्ट्रीट योगा भी करवा लेते हैं, स्ट्रीट डांसिंग होती है, लेकिन स्ट्रीट मेडिटेशन नहीं हुआ है कभी। तो ये, यूएस में क्या सब किया था आपने? हाँ यूएस में थे तब किया था आपने? हाँ, यूएस में थे तब मुझे ये थॉट आया था। तो अभी ये भी कर लेते हैं, स्ट्रीट मेडिटेशन। कुछ अरेंज करेंगे, वी आर अरेंजिंग फॉर अ माइक एंड म्यूजिक एंड ऑल दैट, एंड वी विल जस्ट आस्क पीपल टू टेक अ पॉज and take a pause and catch their breath while in the middle of the everything. चलो नाइस देखते हैं वो नाइस भी कैसा नाइस। होता है. We'll experiment. Thank you, thank you, thank you. I bow down to चलो the बाय divine that एवरीवन, is बाय located where you एवरीवन। are. Hari Om Tat Sat. Thank you, thank you, Thank you. thank you. Om Shanti, Shanti, Shanti.